Hello everyone, I'm Ruchika from English Academy and I welcome all of you to this session. Today we'll cover writing skills topic for class 12th, invitation and reply writing. So we'll cover the format. I'll give you some important tips of how to attempt this question and we'll see some examples, solved examples of invitation and reply writing. So in this video, we'll cover both formal and informal invitations and how you have to write the reply. So class 12th में किस तरह का question आता है, कैसे आपने उसे attempt करना है, everything we'll cover in today's session. Hello Amitesh, hello Rajeshwari, Isha, Nikunj, Vibhuti. So I hope you all are preparing for your board exams. And if you have any doubts or if you are requiring any video on any topic, please mention in the comments. So if we have a video on that topic, we will share the link with you, or else we will make a video lesson for you. So in today's session, we will cover invitation and reply writing, which comes under the short writing skills of class 12 syllabus for this year 2020-21. And before starting our session, I have a request. Please hit on the subscribe button below this video so that you get notifications regarding the next uploads on our channel, and any announcements that we make, you get to know those also. Another thing, we are also present on social media platforms, that is Facebook, Instagram and Twitter, and we keep on updating the latest information related to exams, education and such trivia. So please follow us on these platforms as well. Good evening Ritu. Hi Isha. Hello Sahaj. So now we will, ninth class paper is online or offline. See, class 9th exam depends on your school. So your school will decide whether the exam will be conducted online or offline. But as your board exams will be conducted offline, I think schools will also conduct the exams offline so that students remain used to writing on paper, and you get the feel of how you have to write your final exams in the boards. Now another thing, we have also activated super chat and super stickers in this live session. So if you are a great fan of English Academy and you really want to motivate us, do use this medium for motivating us and inspiring us to keep on working hard and preparing good content for all of you. So अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं. So today we will see invitation and reply writing. What is the format? What is the marking scheme for class 12? Some important tips of how to attempt the question, and then we will also see some solved examples. Let us begin. First of all, let us see what is an invitation. You all know invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. जैसे हम हिंदी में कहते हैं किसी को न्योता देना. अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, कोई फंक्शन है, कोई हाउस वार्मिंग है, कोई स्कूल का फंक्शन है, तो एक इनविटेशन भेजा जाता है विच इज इन अ रिटन फॉर्म. यहाँ पर हम रिटन फॉर्म वाले इनविटेशन को ही कवर करेंगे. वर्बल रिक्वेस्ट वाला इनविटेशन, या अगर आप व्हाट्सएप में किसी को इनफॉर्मली इनवाइट करते हैं, वो सब इनविटेशंस यहाँ पर नहीं है. जो इनविटेशंस रिटन फॉर्म में भेजे जाते हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. Now it can be in the form of an invitation card, which is generally considered as a formal invitation, or it may be in the letter format as well, which is more informal. इससे हमें क्या पता लगता है? इनविटेशन लिखने के दो तरीके हैं. There are two ways of writing an invitation. एक तो होता है जैसे इनविटेशन कार्ड होता है, जैसे हमारे घर पर शादी के इनविटेशन कार्ड्स भी आते हैं. Those are formal types. कोई स्कूल में फंक्शन है तो भी आपको स्कूल से इनविटेशन कार्ड मिलता है आपके पेरेंट्स के लिए. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मल टाइप ऑफ इनविटेशन. सेकेंड इज इनफॉर्मल. जैसे अगर हमारे घर में शादी है, हम अपने रिलेटिव्स को एक लेटर भेजते हैं इनविटेशन की. दैट इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ इनविटेशन. So here we will cover both. I have examples for both types of invitations, formal and informal both. Okay. So now you know what are the two types of invitations. आपके एग्जाम में फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है. तो आपको दोनों ही लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए. Now we move on to the next thing, that is class 12th में जो writing skills में invitation and reply writing का question आएगा. It will come as a short answer question.
Short answer question means जो word limit है that is only 50 words and the marks weightage is 3 marks. Okay, I hope it is clear to all of you. आपके क्लास 12th के जो पेपर में अगर इन्विटेशन या रिप्लाई राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, it will be a short answer question in 50 words. You have to write it and it will carry 3 marks weightage. Now we move ahead and we see what is the breakup of marks. ये जो 3 marks है ये कैसे distribute किए गए हैं. सो दिस इज द ब्रेकअप. सबसे पहले जो फॉर्मेट है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मल या इनफॉर्मल, जैसे भी आपने इनविटेशन लिखना है या रिप्लाई लिखना है, उसका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए. इट विल कैरी 1 mark. The content will again carry 1 mark. Content means what all information you are supposed to mention in the invitation or reply. That should be complete. That carries 1 mark weightage. And then the expression, that is your grammatical accuracy, your spellings, that is again 1 mark. So this is the total breakup of 3 marks. Now we move ahead and we see some what is the format of invitation and reply writing. जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो इन्विटेशन है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सबसे पहले देखते हैं जो इनफॉर्मल टाइप का इन्विटेशन है, जिसमें आपने एक लेटर स्टाइल में इन्विटेशन लिखना है. वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द सेंडर्स एड्रेस, देन यू विल राइट द डेट, देन सैल्यूटेशन दैट इज हेलो और हेलो लिखेंगे या फिर डियर फ्रेंड लिख सकते हैं. जो भी आपका रिलेटिव है उसे आप एड्रेस कर सकते हैं. देन कम्स द बॉडी. बॉडी में आपने मेनली ये बताना है कि क्या इवेंट है, कब हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स बतानी है. आपने अपने उस फ्रेंड को या रिलेटिव को इनवाइट करना है इस बॉडी में. Then comes the complimentary clause. Then you will write subscription and your name. Subscription means जैसे हम लिखते हैं RSVP, that is a French term, respondez s'il vous plaît. That means आप हमें रिप्लाई कर देना अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए कि आप आएंगे या नहीं आएंगे. And then you will write the writer's name and designation or contact number. This depends on the question. Question में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी तरह से आपने यहाँ पर लिखनी है. ये तो हुआ फॉर्मेट इनफॉर्मल टाइप के इन्विटेशन का. Now we see if you have to prepare a formal invitation. Formal invitation जैसे कि कोई भी आपने किसी ऑफिशियल को इनवाइट करना है या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है उसका इनविटेशन बनाना है या मैरिज है या कोई वेडिंग एनिवर्सरी का आपने इनविटेशन कार्ड तैयार करना है, तो आप फॉर्मल टाइप का इनविटेशन लिखेंगे. उसमें आप सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखेंगे या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम आएगा. फिर आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे योर बिनाइंग प्रेजेंस इज सॉलिसिटेड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रेस द ओकेजन. ओके, दैट इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. गौरव, मैं यही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है. स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं आपको ये बता रही हूँ. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. फॉर्मल इनविटेशन है जैसे आप किसी बिजनेस कंसर्न को भेजते हैं या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है तो स्कूल वाले पेरेंट्स के लिए जो इनविटेशन भेजते हैं, या अगर कोई वेडिंग है तो आप कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वेडिंग का जो कार्ड होता है दैट इज ऑल फॉर्मल इन्विटेशन, जो एक कार्ड फॉर्मेट में होता है जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं. इनफॉर्मल इनविटेशन होता है जो आप जनरली अपने रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स को भेजते हैं, जो आपका लेटर टाइप में लिखा जाता है, जिसका फॉर्मेट अभी अभी हमने डिस्कस किया था. So let us discuss the formal invitation. This is in the form of a card. And now the next thing is the purpose of the invitation. आप किसी को क्यों invite कर रहे हैं? अगर कोई specific purpose है, जैसे कि वो chief guest हैं या उन्होंने कोई prize distribution करनी है, and then you will write the name of the honoree. Honoree is any guest on the occasion, any chief guest. उसका नाम भी आप include करेंगे. Next thing is the day, date and time of the event. These details are very important. Whenever you are writing an invitation, you have to cover these 3 things: day, date and time. Then the name of the place, location with complete address, जहाँ पर ये event ये होने वाला है जिसके लिए आप invitation भेज रहे हैं. इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप लिखेंगे RSVP, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इनफॉर्मल इन्विटेशन में. देन कम्स द नेम ऑफ द होस्ट एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आपका जिसको आप इन्विटेशन भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकता है.
तो ये तो हमने देखा फॉर्मेट है फॉर्मल इनविटेशन का, और हमने इससे पहले यहाँ पर डिस्कस किया था लेटर टाइप फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन. Now let us proceed further and we will see what all has to be included in the format. चाहे आप informal लिख रहे हैं या आप formal invitation लिख रहे हैं, आपके format में क्या क्या कुछ होना चाहिए. Name of the host, standard expression जैसे कि request the pleasure of your company or solicit your gracious presence, something like this. Then the purpose of the invitation. If there is a specific purpose, you are requesting the person to be the chief guest or to take part in the prize distribution, that purpose should be there. Then the name of the honoree, as I told you, if there is a chief guest at the function, you will write the name. Then the important detail is the day, date and time of the event. And another thing is that the date should be written in letters and you should not use any abbreviation. These things we will cover further. जब हम tips discuss करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि invitation में जो letter लिखी जाती है कि किस दिन वो event होगा, वो function होगा, वो जो date है वो आपने letters में लिखनी है, numbers में नहीं लिखनी है, especially in formal invitation. नेक्स्ट थिंग जो फॉर्मेट में होनी चाहिए, दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन विद कंप्लीट एड्रेस. यू विल एंटर द एड्रेस, वेन्यू, तो जो आपकी पार्टी है, इवेंट है, उसका एड्रेस और उसका वेन्यू क्या है, उसका सारा जो डिटेल है वो लिखना बहुत जरूरी है. और फिर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में RSVP, जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेस यू, which is a French term, respondez s'il vous plaît. Here you can see respondez s'il vous plaît, which means please respond, यानी कि आप रिप्लाई दीजिए. अगर आप इस फंक्शन को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिटेल्स आपने यहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट की हैं कि वो आपको बता दें. ओके, देन यू ऑल्सो हैव टू गिव योर टेलीफोन और मोबाइल नंबर और द एड्रेस जिस पर लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. And if in the question any other relevant details have been mentioned, those have also to be covered in the format of the invitation. I would just go back and see your messages, but actually I'm not able to see. Just a minute. Hello Bhavya, it's okay. You can see the recording of this lesson. If you have missed the previous part, you can once the session is over, आप इसका replay कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि invitation ने 5 W's को reply करना है. What are the 5 W's that an invitation should reply? What? The first W is what, which means the occasion क्या है, क्या occasion है जिसके लिए आप किसी को invite कर रहे हैं. The next W is when, that is the date and time. So when will this occasion happen? किस दिन होगा, कितने बजे होगा. The next W is where, that is the venue. ये occasion कहाँ पर होगा. The next W is who is the name of the host. So you also have to mention the name of the host, the person who is hosting this event. Next W is whom. Whom means the name of the person being invited. आपने ये invitation किसके लिए लिखा है उसका नाम भी होना चाहिए. So these 5 W's are very important, student. Your invitation should reply to these 5 W's. इन पांचों W's का reply आपके invitation में होना चाहिए. Bhavya, in class 11th, invitation and reply writing has been deleted for this session. In the session 2020-21, invitation and reply writing is in the syllabus of class 12. अब हम आगे चलते हैं and I have some important tips on how to write an invitation. So let us check them out, and the first tip is that it is to be written in third person. Third person means आपने I या फिर you वाले pronouns को use नहीं करना है, right? You can use pronouns like he or she or they. Okay, so this is how you have to write in the third person. The next important tip is it has to be polite and courteous. You have to use very polite and courteous words. Polite and courteous means ऐसा नहीं करना कि you have to come, you have to attend this function. No, you are requested. Your presence is requested at this event.
This is the kind of terms that you have to use. The next thing is it has to be in 50 words. The word limit has to be kept in mind. You don't have to go on and on writing. This is not a creative writing question. You have to be precise. You have to write within the word limit, that is 50 words. The next important thing is that the invitation has to be enclosed in a box. If you are writing a formal invitation, जो एक invitation card की तरह बनता है, जैसे आपने देखा इनविटेशन कार्ड के चारों तरफ में आपने एक बॉक्स बनाना है ब्लैक कलर के पेन के साथ. द नेक्स्ट थिंग इज द डेट्स मस्ट बी रिटन इन लेटर्स. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आज की डेट है 7 January 2021. So how will you write if you are inviting someone to an event on 7 January 2021? तो आप अपने इनविटेशन में लिखेंगे you are invited to my housewarming party which will be held on 7th of January then 2021. So this is how you have to write in letters. What I mean in letters means in words. तो आपको इस तरह से डेट और टाइम भी इसी तरह से वर्ड्स में लिखना है. Now we have another important tip, that is you have to use simple present tense. Okay, just try and use simple present tense, that is this happens on this date and you are invited to this function. इस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. जब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे थिंग्स विल बी क्लियरर फॉर यू. Now we move ahead and we see how you have to write a reply. Reply writing में कुछ important चीजें जिनका ध्यान रखना है, आइए देखते हैं. The first thing is it has to be very short. रिप्लाई में आपने कुछ ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है. जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, बस उसी को आपने एक लेटर फॉर्मेट में लिख देना है. Another important thing is you have to acknowledge the invitation. Acknowledge the invitation means you have to be thankful to the person for inviting you to the function. Then you have to express thanks in the third person. Again in the third person means आपने ऐसे लिखना है, pronouns जो यूज करने हैं वो थर्ड पर्सन के यूज करने हैं. Next is you have to mention acceptance or regret. So if you will attend the function, if you are accepting the invitation, you will mention acceptance, that okay, thank you for your invitation, I will attend the function. If you are unable to attend the function, then you will mention your regret, that you will say I am sorry, I am not able to attend your function. ये चीजें आपकी इसमें कवर करनी बहुत जरूरी है. And the next thing that you have to cover is that you have to use pleasant language. You have to be very formal and you have to use words which are pleasant and you don't have to use any language. Informal language नहीं use करनी है, formal words use करने हैं. Another important thing is you have to be formal in tone and treatment, just like I have told you. फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है. अगर आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन फॉर दैट. सो बी रेडी. इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्वेश्चन. Then you have to specify the reason in your reply. You have to be brief and specific, just I told you earlier also. It is not a creative writing question. Again, there is a word limit to this. This is a short writing skill question, so you have to be brief and specific. Another thing is the word limit. Usually the word limit is mentioned in the question. अगर question में word limit नहीं दिया है, it is 50 words. Okay? अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको उतने ही वर्ड्स में अपना रिप्लाई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. Now we see some examples of invitation and reply writing. So the first example is a formal invitation. Question is, on 30th November, your school is going to hold its annual sports day. Write a formal invitation in about 50 words requesting the parents of all students to grace the occasion. You are Karuna / Karan, Sports Secretary, Sunrise Global School, Agra.
So please keep in mind the information that is given in the question. You have to include this information in your formal invitation. As it is mentioned, it is a formal invitation. यहाँ पर भी question में लिखा हुआ है. So एक कार्ड के फॉर्म में हमने इन्विटेशन लिखना है, जैसे फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. आइए देखते हैं हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. First of all, you can see I have drawn a box on the outer border of this invitation. This is an invitation card. सबसे पहले host का नाम आएगा Sunrise Global School, Agra. Then we have to write the school requests your presence on the occasion of annual sports day. So what is the occasion? Annual sports day. Then I am writing the name of the honoree. Shri Dhanraj Pillai has consented to be the guest of honor and will give away prizes to the winners. Now I will answer what I have answered, when and where. The event will be held at the school grounds, Sunrise Global School, Agra, from 2 to 4 p.m. on 30th of November 2020. So here you can see how you have to write the date in words, and the time is also written in words. Then kindly be seated 15 minutes prior to the commencement of the program. So this is another instruction that we are giving to the parents, that they should come 15 minutes before the commencement of the program. Yes, you have to give a gap of one line over here. Then at the lower left hand corner, you will write RSVP, Karuna oblique Karan. So if you are a girl, you will write Karuna. If you are a boy, you will write Karan. Sports secretary. This is your designation in the school as it has been mentioned in the question. Now we move ahead and we see the second example. This is an informal invitation जो एक letter के form में लिखा जाता है. Question देखते हैं. You are Rukmani oblique Raja. So if you are a girl, you are Rukmani. If you are a boy, you are Raja. And your address is R201 Fort Road, Chennai. You have just purchased a new house. You decide to have a housewarming ceremony and invite your cousin Balaji. Write the invitation in 50 words giving all necessary details. जब आपके पास क्वेश्चन में ये दिया जाता है गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ये आता है कंटेंट में, ये कंटेंट के अंदर आता है. सारी नेसेसरी डिटेल्स मेंशन करनी बहुत जरूरी है, तब आपको कंटेंट का 1 मार्क पूरा मिल जाएगा. एंड वेरी इजीली आप इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन. सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस R201 फोर्ट रोड चेन्नई. देन यू विल राइट द डेट 26 November 2020. Then you will leave one line and write salutation, dear Balaji. This is the name of the cousin. Then you will write the body of the letter. I am writing to you to invite you to my housewarming ceremony. I feel blessed to have got my new house and want to share the happiness with my family and friends. So I have a get together at my new home and request your presence too. The function has been scheduled. So this is the schedule I am sharing with Balaji. For the 1st of December 2020. This is the date I have written in words. At my house number. So house का address भी हमने words में लिखा है. R201 Fort Road, Chennai. From 8 a.m. till 12 p.m. This is the timing. We have arranged a lunch also. Please bring your family too. I need some help with the arrangements. So if you could come an hour early, it would be great. So this is you can see what is the difference in formal and informal. Informal invitation में अपने cousin को लिख रही हूँ तो मैं इस तरह की details भी यहाँ पर mention कर रही हूँ, right? ये सब details हम एक formal invitation में नहीं डालते हैं. उसके बाद आएगा closing, warm regards Rukmani. And if you are a boy, then you have to write your name as is mentioned in the question, that is Raja. Okay, so I hope it is clear to you what is the difference between formal invitation and informal invitation. और जिस तरह का question आएगा उसी तरह का format use करके आपने answer लिखना है. Next जो example है, that is an example of a reply. Generally जो reply होता है वो formal invitation का ही होता है. You are Dr. Stanzin, a certified art therapist from Leh. You have been invited by GD Public School Jammu to conduct a seminar for students on art therapy, the way forward.
This seminar is to introduce students to the usefulness of art dealing with personal and social problems. Write your reply in about 50 words accepting the invitation. ना स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इनफॉर्मल रिप्लाई भी लिखना होगा उसका और फॉर्मल रिप्लाई दोनों का ही जो फॉर्मेट है वो लेटर फॉर्मेट ही होता है, इसीलिए हमने एक ही एग्जांपल रखा है रिप्लाई राइटिंग का. अगर आपने किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी तरह के इन्विटेशन का रिप्लाई लिखना है उसका तरीका लेटर फॉर्मेट ही है. लेट अस सी हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. First of all, the date 21 November 2020. Then the receiver's address, Principal, GD Public School, Jammu. Then the subject, reply to the invitation to conduct a seminar for students. Now, if you are writing an informal reply, आप subject को skip भी कर सकते हैं. Then comes the salutation, sir. I thank you for inviting me to your school. सबसे पहले आपने थैंक्स करना है. अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो अपने रिप्लाई में सबसे पहले उसे थैंक्स करना है. It is a matter of honor for me. Now in the second paragraph of the body, I will write my acceptance. I accept your invitation and this is to inform you of the same. I will conduct this seminar to introduce students to the usefulness of art in dealing with personal and social problems. फिर मैं अपना शेड्यूल लिखूंगी. I will reach Jammu by helicopter on the 15th of December 2020 at 8 a.m. My return is scheduled at 5 p.m. on the same day. Kindly send the school vehicle to pick me up and drop me back to the airport. Looking forward to meet you, the staff and the students. Then is the complimentary close. Thank you, Dr. Stanson. So इस तरह से आप इस रिप्लाई का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. And believe me students, it is very easy to score this 3 marks, and if you don't want to lose this mark, please just revise the format and practice a few sample questions, and that is all that you need to do to score these 3 marks in invitation and reply writing. And with this, we have covered this very important topic of writing skills for class 12 students. Once again, I repeat that if you have any doubt in any topic, please mention in the comment section below this video, and we will share the video link with you. And if we don't have a video lesson, we will prepare a video for all of you. And I hope you now understand how you have to attempt a question of invitation and reply writing. And with this, we come to an end of this session. Thank you for being with me, and with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.